7-8 साल। मेरे घर वाले लगभग 40 वर्ष की उम्र, इनको मर गए भी 25 बरस। हम सब यही धंधा करते। सही है, मगर वो आपको पता था कि घसीटने से ही मर गए? हाँ। झूल से मर गए? हाँ। यही हालत थी, यही हालत थी। गोद में उठा के संडास बाथरूम ले जाऊं, यही हालत थी। There are over 10 million people affected by silicosis in India, a disease known to very few of us. Known by many names like grinder's asthma or potter's rot, silicosis is an occupational hazard caused by breathing in fine silica dust that is generated in industries as varied as mines, quarries, ceramic, and power industries. It leads to a slow death of the victim. The soapstone industry in Kherwada, Rajasthan supplies some of the base materials for beauty products like soaps, fairness creams and hand lotions. Most of the workers here are affected by silicosis and asbestosis. में हुआ था, 7 फिर से हुई, लेकिन उससे कमजोरी बताती है, अब उसकी दवा है नहीं। Ayub Khan was a silicosis patient in Khambhat, Gujarat. The first time we met him, he asked us if we were going to help him through this film. We did not have an answer. When we went back to Khambhat for a follow-up interview a month later, we were informed that he had already died. Ayub was the sole breadwinner of his family of 10. અમારા હેલી મનસ કશે 20-25 માણસ ખરા. બધા શું કામ કરતા હતા? અકીતનું. એમાં ગુજરી કેટલા ગયા? એમે 3 નણંદો, એક દિયર, એક નંદોઈ અને હાહુ હારા અને 3 દીકરા મારા. અને તમારા ઘરવાળા બી ખરા? અને મારા ઘરવાળા. તમારા ઘરવાળાને ગુજરી ગયા કેટલા વર્ષ થયા? આ 20મું વર્ષ ઉતરી રહ્યું. તો મને આ ધંધામાં મરી ગયા તો એમાં શું બીમારી થાય એવું ખબર હતી? અકીતનું ક્યાં આવે તો અકીત ક્યારેક મોલ આવીને ઘસી હોમાં શેઠિયાન તો એના ટીવી થયો અને અમે રકમો ક્યાં ગુજરી ગયા ક્યાં. हाँ मेरे जवान जवान भाई पहुंचे यहाँ अब्बा
नत्ते नजर की सामी एक घोंस के मरे लेंगे पर कोई सेठिया 1 रुपया दे रहे नहीं। तुम काम करके रकम तैयार करके दो ने तो ये दे नहीं तो मरते हैं अपना गिर गए तो अभी और रुपया भी आप लोग को देवे नहीं ना देवे कोई भी ना दे। मेरा अंदाज क्या था कि मैं 15 वर्ष मेरी शादी को 15 वर्ष से वो ये काम करते मेरे भाईजान लगे, लेकिन मेरा अंदाज अभी क्या 20-25 वर्ष ये धंधा करते होंगे। मेरी होशियारी से मैं धंधा देखती हूँ। पहले सारते थे ये धंधा करते पर 1 रुपया भी नहीं। अभी इनका ऐसा पोजीशन है कि बिस्तर में भी नहीं उठ सकते। अभी जोराडू से गाड़ी स्पेशल गाड़ी करके ले गए मेरे भाई ने। हूँ तो हाल काम छोड़ दिया तैयार छू मारू जीव बचे ने मन नहीं लगत हूँ 5 वर्ष और टकीस। हाँ गैरंटी अपनी मन नहीं आव लगत। It's a criminal negligence. Yeah, it's almost as bad as you got and you stabbed somebody in the street. Yeah, if you allow people to become injured knowingly without taking action, as far as I'm concerned, it's a criminal breach and you should be punished for it. पन्ना की हालत बहुत बद से बदतर है, क्योंकि यहाँ पर जो आदिवासी दलित अल्पसंख्यक जो है वो सभी जो है हीरा और पत्थर की खदानों में मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। पत्थर खदान मजदूर संघ के माध्यम से हम लोग मजदूरों के अधिकारों के लिए पूरी लड़ाई शुरू कर दी थी। जब राजस्थान में हम लोगों ने पत्थर खदानों के मजदूरों को लेकर जोधपुर में जब मैंने उनके साथ में एक ज्ञापन दिया और वहाँ पर 21 विधवाओं को 3-3 लाख रुपए का कंपनसेशन मिला, तो इन्फ्रोनिक्स ट्रस्ट के डायरेक्टर आर सीधा जी ने कहा कि आपके यहाँ भी हो सकता है कि ये डस्ट से बीमारी ये हो सकती, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर 90% मजदूर टीबी से ग्रसित थे और यहाँ के लोग यही जानते थे कि जो खदानों में काम करते हैं मजदूर उनको टीबी बीमारी होती है और सिलिकोसिस का नाम भी यहाँ पर किसी ने सुना नहीं था। इनको मैं नाम आ लो ना सिलिकोसिस वाले कुछ नहीं होगा जो ये 3 लाख के चक्कर में हो तो होगा ना कुछ हो। Panna is a small town in Madhya Pradesh. The majority of the mines here are illegal. Because of this reason, most miners and their families are not eligible for free medical services provided by the state. Nor are they eligible for compensation if they died on the job. मेरा नाम सुनील कुमार अहिरवार है और मैं यही पत्थर का काम करता हूँ और मैंने ग्रेजुएशन की है, बीए कंप्लीट है मेरा और साथ में मैंने बीएड भी की है। बीएड मैंने अभी ये पिछले सत्र 2010-11 में की है। अच्छा। और 9 साल से ये काम कर रहा हूँ। अब तो ग्रेजुएशन तो किए हैं मगर वहाँ से काम क्यों नहीं मिला फिर ये काम में? देखिए क्या है कि ये जो आजकल क्या है कि एक तो महंगाई ऊपर से गरीबी। आजकल 2-4-5 हज़ार रुपये का जॉब मिलता है, कहीं भी आप प्राइवेट करोगे 2-4-5 हज़ार रुपये में हम लोगों का चलता नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं, मेरे पापा जी, मेरे भैया सभी लोग यही काम करते हैं। मेरा छोटा वाला भैया वो जो काम कर रहा है वो भी ग्रेजुएशन है। अच्छा। इसी साल उसका। अच्छा। बाकी ये काम बहुत मेहनत वाला है, इसमें मतलब ताकत का कोई वो नहीं होता, लिमिट नहीं होती कितनी ताकत लगाना, इसको अनलिमिटेड ताकत लगती है इसमें, इसलिए आदमी टूट जाता है। इसमें आदमी की लाइफ कम होती है। 10 साल काम करने के बाद आदमी की लाइफ 5 साल घट जाती है। अगर वो 50 साल जिएगा, अगर ये काम कर लेगा 10 साल, तो वो 45 साल में मर जाएगा। और इसका कुछ सोल्यूशन आपको? सोल्यूशन है इसका, आप बोलते हैं कि इसमें नाक में मास्क लगाओ, तो सोल्यूशन है उसका कि अगर आप मास्क लगाएंगे तो उसका जो डस्ट है वो आपकी नाक के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन ये काम मैंने आपको बताया कि ये काम है मेहनत वाला। मेहनत करेंगे आप तो आपको अंदर से
आपकी सांस फूलेगी, और सांस फूलेगी तो आप मास्क लगाएंगे तो आपको घुटन होगी, ठीक है ना। ये मास्क उनको सक्सेस है जो यहाँ पर घूमते फिरते हैं, मास्क हम लोगों के लिए सक्सेस नहीं है। Dr. Muralidhar has been diagnosing patients for silicosis and asbestosis for 12 years. He is one of a handful of doctors who travels across the country to diagnose workers in the asbestos industry. The medical report he produces is an essential part of the process of seeking compensation by the victims. The lung function test has got a function, a value called FVC. Now this FVC is called, it's got a full form, forced vital capacity, in which in asbestosis this function is affected because of the restrictive nature of the disease. It restricts the lung from expanding. The other thing which you think is in the findings when you put the stethoscope, that's called auscultation, you hear some foreign sounds, and especially in the lower part of the lungs, and these foreign sounds are also one of the important things you hear in asbestosis. And the third test I do is called pulse oximeter, which measures the oxygen levels in the periphery, and once we make them run and come back because of the block in the diffusion of oxygen, that is blocked, so that's decreased. So these are all tests and investigations which helps the doctor to reach a diagnosis of asbestosis, apart from x-rays and the history, of course, occupational history. It's trite to say that there won't be any overnight solutions. One of the things that has pleased me about the Turner and Newell cases is that from a situation where we had around 50 over the past 20 years compensated in 2010 under the Employee State Insurance Scheme, we now have a situation around 450 people have been compensated. Now, the money is one thing, and it's nice to see people using that money for purchasing houses and all that type of stuff. But what it does, at least it gives us some ammunition to show the authorities that there is a serious problem here. I think these are few founding steps, I would say, for us to take up a good decision and come up together, and we really need to strike back. There are comprehensive laws that govern workers' safety and compensation issues in India. But companies continue to flout responsibility due to a lack of oversight by the government. With India's status as a booming economy, resources like this marble mine in Rajasthan and these stone quarries in Madhya Pradesh are likely to be exploited even more. And so are the people that work in and around them. पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ कर नहीं सकते और कोई धंधा जान नहीं सकते, इसलिए मजबूरन यही करना पड़ा। और इसके वजह से हर इंसान वही दलदल में फंसता गया। इसीलिए हम बोल रहे सरकार को भी हमारे यही कहना है कि अब इस दलदल में जो लोग गए हैं वो तो गए हैं, लेकिन जो लोग जा रहे हैं उन्हें बचाने की कोशिश कीजिए, उन्हें कोई सहायता कीजिए ताकि वो लोग कोई धंधा कर सके, अपना परिवार, बीवी बच्चों को संभाल सके
और आकर उनका भविष्य बना सके।